Hello students, today we are going to discuss about exercise 12.3 class 10 mathematics. So question number 8 is the given figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of the track. So the given figure is this, and you have to find the length of this length you have to find. Clear? How will you find this length? You will do one thing, that add this length and pi r, because the circumference of the semicircular region is pi r. So pi r plus 106 plus 106. Clear? So I have calculated here distance along the inner edge is equal to AC arc. AC arc लिया, फिर मैंने BD arc लिया, AC arc प्लस BD arc. क्लियर? उसके बाद 106 प्लस 106 प्लस 106, इन दोनों को ऐड किया 106 और 106 को, तो मेरे पास क्या आ गया 212. इसी तरह से पाई आर प्लस पाई आर क्या बन जाएगा 2 पाई आर. नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर, देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन इज 60 मीटर, hence the radius is 30 meter. So 2 pi into 30, 2 into pi की वैल्यू 22/7 into 30 plus 212 and 1320 divided by 7 plus 212. I have calculated this by taking LCM and you will get the answer 2804 divided by 7 meter. This is the distance around the track along its inner edge. Now I am going to calculate the area of the track. To find the area of the track, how will you find the area of the track? आप क्या करोगे? PQRS, this is PQRS, bigger rectangle is PQRS, और bigger semicircular region का area ऐड करोगे. Area of PQRS plus area of bigger semicircular regions, ओके, प्लस इन दोनों का एरिया ऐड करने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पर बिगर सेमी सर्कुलर रीजन थे, कितने थे 2 थे. सिमिलरली 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कुलर regions. Okay, so area of the PQRS. Now PQRS, its length is PQ and its breadth is PS. Now the distance, what is given in the question? The track is 10 meter wide. Okay, so this distance is 10 meter, this distance is 10 meter, and this distance is 60 meter. It means the total distance from here to here is 80 meter. Means breadth of the PQRS is 80 meter. So the length is 106. So area of the PQRS is length into breadth, that is 106 into 80 plus 2 into area of the bigger semicircular region, that is 2 into pi r square upon 2. पाई r1 लिख लो यहाँ पर, माइनस एरिया ऑफ ABCD. नाउ ABCD लेंथ इज 106 एंड ब्रेड्थ इज 80 मीटर. सो आई एम राइटिंग हियर 106 into 60 plus area of the two semi circular region, smaller one. इसका डायमीटर कितना था 60 था, देयरफॉर द रेडियस इज 30. तो हम यहाँ पर रेडियस 30 लेंगे. सबसे पहले 2 इंटू पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? वेयर r1 इज रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल एंड r2 is radius of smaller semicircle. Clear?
सो इट इज़ इक्वल टू 106 इंटू 80, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, 8 1 8, साथ में 0 प्लस 2 के साथ 2 की कटिंग, पाई की वैल्यू 22/7, बिगर रेडियस जो था वो 40 इंटू 40 था, माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 0 6 1 6, 2 के साथ 2 की कटिंग प्लस 22/7 इंटू R2। स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना था? 30 था, सो 30 इंटू 30। क्लियर? सो इट इज इक्वल टू 8480 प्लस 1600 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16 2 32, 3 कैरी, 16 2 32 प्लस 3 35। एक बार दोबारा चेक कर लें, 16 2 32, 3 कैरी, 16 2 32 प्लस 3 35 00, 352 00 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6360 प्लस 3 3 9, 9 2 18, 1 कैरी, 9 2 18 प्लस 1 19, 00 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठे लिखूंगी और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे लिखूंगी। क्लियर? सो इट इज इक्वल टू 8480 माइनस 6360 प्लस 35200 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 19800 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? सो इट इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया, 0 माइनस 0, 8 माइनस 6 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 8 माइनस 6 इज 2, माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, एंड 352 में से 198 माइनस किया, 2 माइनस 12 माइनस 8 इज 4, 12 minus 8 is 4 and 4, 14 minus 9 is 5 and 2 minus 1 is 1, 00 divided by 7। 7 से कटिंग किया, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 00, 2120 डिवाइड प्लस 2200, 0 2 3, 2 plus 2 4, 4320 meter square is the answer। So this is the area of the track which is shaded by red pen। Clear? So this is all about question number 8. Now I am going to discuss about question number 14. AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of the radii 21 centimeter and 7 centimeter. AB and CD are respectively arcs of the two concentric circles, arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter, and center O, if angle AOB is equal to 30 degree, find the area of shaded region। शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो सबसे पहले द फिगर इज गिवन, this is the figure and you have to find the area of this region। Angle AOB is also given, this is A, B, O and this is C and D। This angle is given, that is equal to 30 degree। What you have to do, area of shaded region is equal to area of AOB minus area of COD। AOB is a sector and the formula for calculating the area of the sector is theta upon 360 degree into pi r1 square minus theta upon 360 degree into pi r2 square। Here r1 is equal to 21 centimeter
and R2 is equal to 7 centimeter. So I am going to put the value here. First of all, I am taking theta upon 360 degree pi common, R1 square minus R2 square. Why theta upon 360 degree is common? Because 30 degree is common for both the sectors. 30 degree upon 360 degree into 22 upon 7 into R1 square, that is 21 का square 441, R2 square 49 is equal to 1 upon 12 into 22 upon 7. 441 में से 49 माइनस किया, 11 minus 9 is 2, 3, 13 minus 4 is 9 and again here 392. So 2 के साथ 2 6 12, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12. 2 के साथ 2 3 6, 2 9 18, 2 8 16. 7 के साथ 7 1 7, 7 1 7, 2 carry 7 4 28. So 22 into 14 divided by 3. It is equal to 14 2 28, 2 carry 14 2 28 plus 2 30 divided by 3. So the area is 308 upon 3 centimeter square.